Hello everyone, a warm welcome to all of you in the today's session on EduTap. And my dear friends, all of you are really welcomed in the top 50 MCQs session for the month of September part 1. So my dear friends, as per the demand of the students, we are back with the top 50 MCQs series, and this is the part 1 for the month of September 2023. And in this session we will be covering the top 50 MCQs from the month of September, the general awareness MCQs which are relevant for RBI Grade B, NABARD Grade A as well as the SEBI Grade A exam. So my dear friends, before starting with the session, there is a small request to all of you. Please tell me in the chat box if I am audible and visible to all of you so that we can begin this particular session. So hi Mrinmoy, Chetak, after a long time, yeah, definitely, but yes, we will be continuing with this particular series. So my dear friends, as I can see here that yes, all the people are saying that I'm audible and visible to all of you. So let me once again tell you that in this session we basically revise everything that we have covered in the fast track sessions that are being uploaded on our YouTube channel. So in this session as well, we will be revising all those content in the form of MCQs, and solving the MCQs is one of the best way in order to just analyze that whether you have retained all the information that you have covered in those sessions or not. So in this session we will be solving top 50 MCQs, but before beginning with the session guys, there is an announcement for all of you that we at EduTap are offering the comprehensive guidebooks for all the aspirants who are preparing for NABARD Grade A, RBI Grade B as well as the SEBI Grade A exam. So when I talk about these guidebooks offers you the one-stop solution about all the queries that pops up in your mind as an aspirant. So these queries can be regarding the body itself in which you are targeting to enter, it can be regarding the exam, it can be regarding how to prepare for the exam. For example, when I talk about the body in which you are targeting to enter, for example, what exactly is the developmental role that RBI plays in Indian economy? When I talk about the exam, what is the eligibility criteria, what is the detailed syllabus? Then about the preparation, so what are the sources that you should follow whenever you are preparing for this particular exam? So my dear friends, the answers to all such kind of queries will be provided to you in this particular guidebook. So please download these guidebooks from the link given in the description of this particular session. Now let's get back to the session, and in this session, as I told you, we will be covering the 50 MCQs. So it is mandatory for all of you first of all to participate in the session. And how you can participate? By telling me the right answers to the questions in the chat box. Okay, live chat box अंदर आप अपने questions का answer मुझे बताइए by just typing the question number and the option that you think is the right answer to that particular question. And do note down your scores as well, because at the end of the session you have to tell me your scores. So my dear friends, I think it's a good time. We are good to go with the session, and here is the very first question on the screen. So the very first question on the screen for the today's top 50 MCQ session is on the International Congress on the Chemistry of Cement. You have to tell me the name of the country which will be hosting this Congress in year 2027. So Mrinmoy, Chetak, Bhumika, Shalini, Ravi, Dolly, Chandani. So my dear friends, I want all of you to tell me the right answer to this question. So as I can see, all the people are saying option A is the right answer. Absolutely right. India is the country which has won the bid to host ICCC 2027. Now guys, when I talk about this ICCC, it basically reviews the progress in the research regarding the different topics like the area of cement and concrete. अगर हम बात करते हैं last time इंडिया ने इस कांग्रेस को कब होस्ट किया था, it was basically in 1992 in the New Delhi. और जब हम बात करते हैं presently, अगर हम बात करते हैं इस साल की ये कांग्रेस कहां पर हो रही है, so it is being taking place in Bangkok, Thailand. Okay, so these are the important information you have to cover. First of all, India is the country which will be hosting this in 2027, and presently it is being taking place in Thailand, and that is absolutely the right answer. I can see all the people have given me the right answer. Well done guys. Let's move on to the next question. So next question guys, the question is on the Rashtriya Vigyan Puraskar. So recently government of India come up with the new set of awards which are basically related to the technology science. Okay, so यहाँ पर आपको go through करना इन statements को, and you have to tell me कि कौन सी statement है which is true regarding the Rashtriya Vigyan Puraskar. So my dear friends, please tell me what is the right answer. The very first statement says that the award honors the contribution in the field of literature and arts, which is absolutely incorrect. Second statement says that awards will be announced on the 15th August Independence Day every year, which is once again incorrect part. Third statement says that the award categories include Vigyan Ratna, Vigyan Shri, Vigyan Yuva, Shanti Swarup Bhatnagar and Vigyan Team. And let me tell you my dear friends, this is absolutely the right answer. Option C is the right answer. So Ravi, Preeti, Chandani, Dolly, Chetak, Shalini,
Viraj, all of you have given me the right answer, that is option C. So यहाँ पर हम देख सकते हैं my dear friends that these awards are basically will be conferred in the field of science, technology and innovation. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, that is राष्ट्रीय विज्ञान. तो विज्ञान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको ये केटर करने वाला है, और जो भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लोग देते हैं इसके लिए, तो उनको यहाँ पर नवाजा जाएगा, उनको रिवॉर्ड किया जाएगा इस पर्टिकुलर अवार्ड से. सो व्हाट आर द 4 कैटेगरीज इन दिस पर्टिकुलर अवार्ड? The 4 categories are Vigyan Ratna, Vigyan Shri, Vigyan Yuva, Shanti Swarup Bhatnagar and the Vigyan Team. Another important point is that these awards, as they are related to the technology, so they will be announced on the National Technology Day. और वो किस डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं? That is 11th of May. तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए, ये डे आपको पता होना चाहिए, साथ में ये 4 कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए. Absolutely right, my dear friends. So this is the right answer. Let's move on to the next question. So my dear friends, we all know that the elections यहाँ पर आने वाले हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक मेजर स्टेप यहाँ पर लिया है, that is they want to motivate the young voters to come up in the elections and vote, because vote is really very important when we talk about deciding that which government will come. ओके, सो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्राण कॉमिक्स के साथ एक कोलैबोरेशन किया है टू एजुकेट एंड मोटिवेट यंग वोटर्स. आपको मुझे बताना है कि उस कॉमिक बुक का टाइटल क्या है. व्हाट इज द टाइटल फॉर दिस पर्टिकुलर कॉमिक बुक? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. सो वी ऑल नो माय डियर फ्रेंड्स, 1960 के अंदर चाचा चौधरी जी का जो कैरेक्टर था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस बार फिर से चाचा चौधरी जी की जो यहाँ पर स्टोरीज हैं उसके थ्रू मोटिवेट किया जाएगा हमारे यंग एडुकेटर्स, हमारे यंग वोटर्स को. तो यहां पर व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर हियर इज चाचा चौधरी और चुनावी दंगल. दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंड दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द प्राण कॉमिक्स. जब हम बात करते हैं चाचा चौधरी जी का जो कैरेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इट वाज बेसिकली डन बाय रिनोन्ड कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा, और इन प्राण कुमार शर्मा जी के नाम पे ही है, दैट इज प्राण इकोनॉमिक्स, दैट इज प्राण कॉमिक्स. ओके, तो प्राण कॉमिक्स बेसिकली प्राण कुमार शर्मा के नाम से ही आई है, 1960 में इंट्रोड्यूस किया था. तो एक बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली एग्जाम ट्रेंड जब हमने देखा है तो वहां पर हमने देखा है दैट क्वेश्चंस on the background of such kind of topics are being asked in the exam, so that's why you have to cover these information as well. Let's move on to the next question, a very easy question before all of you, the question from the defense exercise, and the defense exercise which is here in the question is Simbex. तो यहाँ पर जो Simbex exercise है इसका कौन सा एडिशन इस साल हुआ है, और ये कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई है? वी ऑलवेज टेल यू दैट व्हेनेवर देयर इज अ डिफेंस एक्सरसाइज यू हैव टू रिमेंबर कि उसका वेन्यू क्या है, उस एक्सरसाइज का वेन्यू क्या है, वो कहां पर होने वाली है, उसका नाम क्या है, और साथ में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन होने वाली हैं. सो यहां पर मुझे जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर. अगर हम बात करते हैं सिम्बेक्स की, तो इट इज बेसिकली सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? इट इज ऑप्शन बी, दैट इज Indian Navy and the Republic of Singapore. My dear friends, let me tell you that the addition, this is just a kind of vague data on which the question has been created. The actual question, the actual information जो आपको पता होनी चाहिए to answer the question is कि ये कौन सी countries के बीच में ये exercise की जाती है, that is Indian Navy and the Republic of Singapore Navy. Absolutely right. All the people have given me the right answer. Let's move on to the next question. So my dear friends, you will be really proud to know that India has basically got the status of the World फेडरेशन फॉर द मेडिकल एजुकेशन. बेसिकली इंडिया का जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसको स्टेटस ग्रांट हुआ है, और ये 5 स्टेटमेंट्स आपके सामने मेंशन है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट पार्ट. ओके, पहली स्टेटमेंट कहती है दैट द रिकॉग्निशन स्टेटस इज ग्रांटेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years. सेकंड स्टेटमेंट स्टेज दैट ओनली न्यू मेडिकल कॉलेजेस in the upcoming 10 years will become WFME accredited. The third statement says that the recognition will not affect the accreditation of existing medical colleges. That means जो existing medical colleges है उस पर कोई impact नहीं होने वाला है. नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट ये जो रिकॉग्निशन है ये 10 years के लिए दिया गया है, और एग्जिस्टिंग या फिर जो आने वाले टाइम में जो कॉलेजेस बनने वाले हैं उन सभी को यहां पर एक्रेडिटेशन प्राप्त होगी एज पर दिस पर्टिकुलर status which has been granted to the NMC. And option E states that the recognition is aimed to reduce the quality and standards of medical education in India. Let me tell you, ये जो status grant किया गया है NMC को, it aims to enhance the quality and the standard of medical education in India, and that's why this statement is absolutely incorrect. So the right statement here is option D, because this status is granted to the NMC for a tenure of 10 years, and all the existing as well as the new medical colleges in India will become WFME accredited during this particular period. I hope this is clear to all of you, my dear friends. And as a part of this recognition, you can see that 706 existing medical colleges जो इंडिया के अंदर है, ये इस
एक्रेडिटेशन के साथ यहां पर ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की फेवरेट स्कीम से। तो यहां पर जो स्कीम हम डिस्कस करेंगे दैट इज द पीटीपी एनएआरसी। तो गवर्नमेंट ने यहां पर इसका फेज 2 को अनाउंस किया है एंड यू हैव टू गो थ्रू द स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई कि कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है विद रिगार्ड टू द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन स्कीम। तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि वो कहां से लॉन्च हुई थी और कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट सेज व्हाट इज द एम ऑफ द स्कीम, that is to strengthen the livelihood opportunities for the tribal artisans. Third statement says that it is a center sponsored scheme which is managed by the TriFed. So my dear friends, please tell me what is the right answer to the question number 6. It is option 1 only, option 1 and 2, option 2 and 3, or all of the above. So here absolutely right, it is option 1 and 2. So can you tell me that what is the incorrect part in the statement 3? Statement 3 के अंदर incorrect part क्या है? It says that it is a central sponsored scheme, but it is a central sector scheme, and that is why the third statement is absolutely incorrect and the right answer here is option B. Okay, so जब हम बात करते हैं tenure की my dear friends, that the phase 2 of this particular scheme will be from 21st September to 10th of November 2023. Let's move on to the next question. So next question again on a very very important scheme, that is PM Vishwakarma scheme, जिसको recently launch किया गया है. And my dear friends, the question is you have to once again identify the correct statement with regard टू द पीएम विश्वकर्मा स्कीम। सबसे पहली स्टेटमेंट है कि ये स्कीम को स्टेट गवर्नमेंट यहां पर फंड करने वाली है जिसका आउटले रहेगा 5000 करोड़ रुपीस। सेकंड स्टेटमेंट टॉकिंग अबाउट द एम ऑफ द स्कीम, दैट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट ओनली टू द आर्टिजन, सिर्फ वो आर्टिजन जो कि कारपेंटरी ट्रेड के अंदर है उनको यहां पर केटर किया जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट जो भी स्कीम, ये स्कीम उन सभी बेनिफिशियरीज को ऑनबोर्ड करेगी ऑन द उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म एज एम्प्लॉइज इन द फॉर्मल एमएसएमई इकोसिस्टम, बट एज पर द स्कीम इट विल बी declaring and considering themselves as entrepreneurs and not the employees. So that statement is absolutely incorrect. Okay, the option D says that the scheme is having an outlay of 18,000 crore और यहाँ पर ये जिन लोगों को benefit देने वाली हैं they have been divided in 18 trades which also includes benefits of such as recognition, skill upgradation and marketing support. तो यहाँ पर ये सभी facilities उनको provide की जाएगी and my dear friends that is absolutely the right answer. Option D is the right answer to this question. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो PM विश्वकर्मा स्कीम है it is a central sector scheme. ठीक है, तो PM विश्वकर्मा स्कीम क्या है? एक central sector स्कीम है, उसका आउटले है 13,000 करोड़ रुपीस और ये क्या करने वाली है? एंड टू एंड सपोर्ट देगी आर्टिजन्स को और क्राफ्ट पीपल को, और इन्हीं लोगों को जिनको सपोर्ट देने वाली है दे हैव बीन डिवाइडेड अक्रॉस 18 ट्रेड्स एंड दीज 18 ट्रेड्स इंक्लूड्स कारपेंटर्स, बोट मेकर्स, आर्मरर्स एटसेट्रा. एंड माय डियर फ्रेंड्स लेट मी टेल यू दैट जितने भी लोगों को यहां पर बेनिफिशियरीज को ऑनबोर्ड किया जाएगा उनको एज एन एंटरप्रेन्योर यहां पर डिक्लेयर किया जाएगा, उनको एंटरप्रेन्योर कंसीडर किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अकॉर्डिंग. एंड एब्सोल्युटली राइट, I can see here Dolly, Chetak, Shraddha, Shalini, Nilesh, Riya, everybody has given me the right answer, that is option D. Now let's move on to the next question, my dear friends. You will be really glad to know that one of the Indian sites have been inscribed on the UNESCO World Heritage List and you have to identify what is the name of that site. So let me tell you that this particular site was basically being in the tentative list since year 2014. 2014 से ये जो list site है हमारी tentative list के अंदर थी, but what exactly is the new part is that it has finally been inscribed into the UNESCO World Heritage List and the name of that part is Sacred Ensembles of Hoysalas in Karnataka. Option C is absolutely the right answer to the question. Absolutely right. So option C is the right answer, my dear friends. Let's move on to the next question. So here you have to identify the name of the operation जिसको recently conduct किया था Indian Coast Guard ने. Basically this has been done to revalidate the coastal security mechanism. So what is the name of that operation? So operation हम इस तरीके के करते रहते हैं. Indian Coast Guard मंथली बेसिस पर ऐसे ऑपरेशंस करता है. आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर. What is the reason behind coverage of this news article, my dear friends? The reason is behind that कि ये जो ऑपरेशन है ये न्यूज के अंदर काफी कम आता है और नाबार्ड के एग्जाम हम सभी को पता है कि इट इज ऑन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑपरेशन सजग. तो ऑपरेशन सजग से यहाँ पर कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म को रिवैलिडेट किया गया है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है फिशरमैन्स के अंदर अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो माय डियर फ्रेंड्स, रिसेंटली an e-book has been released
And this ebook basically presents a complete journey of India's G20 presidency. We all know that India is having the presidency of G20. Recently G20 summit was held in New Delhi. So यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि ये जो ebook रिलीज की गई है, the ebook which presents the complete journey of India's G20 presidency, this ebook has been titled as, that is what you have to tell me, what is the title of this ebook? It is People's G20. Absolutely right. All the people are giving me the right answer. That is option C, People's G20 is the right answer. Moving on to the next question. So next question is on the Indonesian Masters, and let me tell you that one of the Indian person has made us proud after winning the men's singles title at the Indonesia Masters, and the person who was defeated in the finals was Japan's Ku Takahashi. So my dear friends, कू तकाहाशी को यहां पर डिफीट किया है इन्होंने फाइनल के अंदर. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? सो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज किरण जॉर्ज. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. किरण जॉर्ज इज द राइट आंसर हु हैज वन दिस इंडोनेशिया मास्टर्स. लेट मी टेल यू दैट recently the exam has taken place of the RBI and such kind of questions were being asked. So same kind of questions can also be expected in the NABARD exam as well, my dear friends. So you have to really see that you are covering such kind of news articles very carefully. Okay, let's move on to the next question. तो अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द इनिशिएटिव जिसको रिसेंटली लॉन्च किया है एयर इंडिया ने. एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इनिशिएटिव बेसिकली सीक्स टू एनहांस द ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस. जो भी हमारे पैसेंजर्स हैं उनका एक्सपीरियंस को यहां पर और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है. एंड उसके लिए इन्होंने सर्विस एश्योरेंस ऑफिसर्स को भी तैनात किया है 16 मेजर एयरपोर्ट्स के ऊपर. और आपके सामने क्वेश्चन है, उस प्रोजेक्ट का नाम आपको बताना है विच हैज बेसिकली बीन लॉन्च्ड बाय द एयर इंडिया. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट? द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट अभिनंदन. ओके, प्रोजेक्ट अभिनंदन यहां पर लॉन्च किया है जिसके अंदर ये सर्विस एश्योरेंस ऑफिसर्स, जो एक्सपीरियंस है हमारे पैसेंजर्स का जो यहां पर ट्रेवल करते हैं एयर इंडिया से, उनके एक्सपीरियंस को बहुत ही बेटर बनाया जाएगा. I hope this is clear to all of you, my dear friends. Let's move on to the next question. So please tell me the name of two entities जिन्होंने collaborate किया है to launch the priceless.com program. Let me tell you that this program redefines the experiential travel in India. और यहाँ पर Ministry of Tourism ने भी इसको support किया है. आपके सामने क्वेश्चन है, ये जो priceless.com program है इसके लिए वो कौन सी दो entities हैं जिन्होंने collaborate किया था? The name of these entities are Mastercard and Invest India. So these are the two entities. Absolutely right, Rinki, Ria, Vishnu. The right answer here is option B, that is Mastercard and Invest India. Absolutely right, option B is the right answer. Moving on to the next question, guys. So recently United Nations Development Program India, उन्होंने पार्टनरशिप किया है नाबार्ड के साथ. एंड इस पार्टनरशिप को बेसिकली साइन करने का क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन, की रीजन बिहाइंड, what is the key aim behind the launch of this particular partnership, between the signing of this MOU between these two entities? That is what you have to tell me here. The first one is urban development को promote करना है and infrastructure projects को promote करना है. Then we have to co-create data driven innovation in the agriculture and food systems to enhance financial literacy and inclusion in the rural areas, to develop implement renewable energy projects, or to promote industrialization and manufacturing in the rural regions. What is the right answer, guys? It is option B, that is to co-create innovation in the agriculture and food systems. यहाँ पर food system और agriculture systems के अंदर हमें innovations लेकर आनी है. और इसको कैसे लेके आएंगे? Data driven innovations रहेंगे. Data को collect किया जाएगा, उसके basis पर देखा जाएगा कि क्या क्या changes हम कर सकते हैं. And that's how they will be making a roadmap in order to bring innovations in the agriculture and food systems. And that is absolutely the right answer, option B. Let's move on to the next question. So my dear friends, once again you have to tell me the name of the entities which has recently collaborated to offer financing to the MSMEs for the installation of solar rooftops. Solar rooftops को यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर MSMEs ताकि सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल कर सकें, उसके लिए उनको फाइनेंसिंग देने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करने वाली है? सो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स व्हाट एग्जैक्टली आर द टू थिंग्स हियर. द टू थिंग्स हियर आर इज द MSMEs एंड बेसिकली बात हो रही है सोलर रूफटॉप की, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है, फिर जो पावर से रिलेटेड है. तो जब हम बात करते हैं MSMEs की, तो MSMEs के लिए कौन सी इंस्टीट्यूशन काम करती है? दैट इज SEBI. जब हम बात करते हैं पावर, तो यहां पर पावर है टाटा पावर, टाटा की पावर को यूज किया गया है. तो टाटा पावर यहां पर और SEBI दोनों ने बेसिकली कोलैबोरेशन किया है सो दैट वी कैन फाइनेंस द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.
Let's move on to the next question, guys. Next question is on the SAF Under 16 Championship 2023. It is a question from the sports, and here you have to tell me the winner. Let me tell you that this particular country has defeated Bangladesh in the finals. तो बांग्लादेश को defeat किया है finals के अंदर to win this SAF Under 16 Championship 2023. And the right answer, the name of the team which was the winner, you must be very proud to hear that it was India which has won this particular championship. Moving on to the next question, guys. Next question is on the Hindi Divas. Let me tell you that this question is from the important days. Okay, so important days से आपके लिए क्या important है? You have to remember the date on which the day is being celebrated. You have to remember the theme, that what exactly was the theme. And apart from that, the third important thing is if that day is having an historical reference. So historical reference भी आपको पता होना चाहिए. तो हिंदी दिवस जो कि सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 14 को, आपको बताना है कि उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है, वो कौन सी स्टेटमेंट एक्यूरेटली इसको डिस्क्राइब करती है. क्या ये यहाँ पर रिनोन हिंदी पोएट की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर ये उस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है जब हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर यूज किया गया था. थर्ड स्टेटमेंट सेज कि जो पब्लिकेशन है हिंदी की पहली डिक्शनरी की, उस डेट को हिंदी दिवस के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर इट मार्क्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट हिंदी यूनिवर्सिटी इन इंडिया. सो व्हाट इज द राइट आंसर? सो हियर आई कैन सी ऑल द पीपल आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इट कमेमोरेट्स द adoption of Hindi as the official language of India. Absolutely right here. Rinki, Preeti, Shraddha, Niranjan, Preeti, Shalini, all the people have given me the right answer. Let's move on to the next question. So अगला क्वेश्चन है सरपंच संवाद ऐप. तो जब भी कोई ऐसा ऐप लॉन्च किया जाता है उसका एम क्या है, और साथ ही साथ उस ऐप को डेवलप किसने किया है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. यहाँ पर जो ऐप है विच इज इन द न्यूज, इट इज द सरपंच संवाद ऐप. तो सरपंच संवाद ऐप क्या करने वाला है, ये हमारी 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेगा. ठीक है, और उससे उसको कनेक्ट करके क्या किया जाएगा, नॉलेज को डिसेमिनेट किया जाएगा. वो सभी पंचायत कोलैबोरेट कर सकती हैं. तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको लॉन्च करेगी, जिसने इसको डेवलप किया है? इट इज बेसिकली द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया विच बेसिकली हैज launched the Sarpanch Samvad app, which has developed the Sarpanch Samvad app. Absolutely right. I'm really glad that all of the people have just come here with the full preparation and all the people are telling me the right answer. I'm really glad to see this, my dear friends. And now let us move on to the next question. So agla question is once again on an MOU, the MOU which empowers the startups and the innovators at the Startup Incubation and Innovation Center, and it will be improving the understanding of the foreign trade policy. You have to tell me that what is the name of the institute as well as the name of the bank जिन्होंने collaborate किया है for this particular initiative. What is the name of that particular part? So it is the IIT Kanpur and ICICI Bank which has collaborated, in which they will be empowering the startups and innovators at the Startup Incubation and Innovation Center by improving their understanding of the foreign trade policies. And this is the right answer to the question number 19. Let's move on to the question number 20. Question number 20 is from the awards. So here awards, यहाँ से आपको basically पता होना चाहिए what is the name of that award, what is the name of the person who has been awarded, and what is the reason behind that, वो कौन सी country से belong करते हैं. Let me tell you that award we are basically discussing here, it is the Knight of the Order of Arts and Letters, and it has been given for the contribution of that person for the art, culture and literature, and for promoting the influence of the arts globally. So my dear friends, what is the right answer? What is the name of that person? It is the Rahul Mishra. Rahul Mishra is the right answer to the question number 20. Let's move on to the next question. So next question is basically on the Ayushman Bhav campaign. So Ayushman Bhav campaign को recently launch किया था गांधीनगर गुजरात से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया है. यू हैव टू गो थ्रू द स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द आयुष्मान भव कैंपेन. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, this campaign is a regional healthcare initiative which focuses on the state of Gujarat. Very first statement is this is absolutely incorrect. Second statement says that the campaign is initiated by the state ministry of health and aims to restrict the healthcare services to the urban areas. ऐसे कोई कैंपेन हम लॉन्च नहीं करते हैं जो कि सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट करे, बल्कि हम तो बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस को हमें कवर करना है. वी हैव टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द पीपल. सो दैट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट. द थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट इट एम्स टू प्रोवाइड सैचुरेशन कवरेज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज. एक सैचुरेशन कवरेज होनी चाहिए, जैसे कि हमने बात किया जितने भी लोग हैं उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए. हर एक विलेज, हर एक टाउन के अंदर इसको दिया जाना चाहिए. और जब हम बात करते हैं इस कैंपेन की इंप्लीमेंटेशन की, दिस कैंपेन विल बी इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द सेवा पखवाड़ा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी.
to the Ayushman Bhava campaign. Absolutely right here. Most of the people have given me the right answer. That is option C to this question. Let's move on to the next question. So my dear friends, we all have heard about the NEBA. So NEBA has been in the news since the last year, and यहाँ पर recently Gujarat Assembly ने भी इसको adopt किया है, and you have to tell me what exactly is the full form of NEBA. So here my dear friend, let me tell you that the questions on such kind of lines are being asked in the exam कि वो कौन सी for example, from here the question can be that what exactly V stands for in the NEBA, and apart from that the whole full form can be asked in the exam. So you have to identify that what is the right answer to this question. So the right answer to this question is National E-Vidhan Application. Option C is the right answer. I hope this is clear to all of you. So NEBA is the National E-Vidhan Application. Let's move on to the next question. The question is on your favorite topic, that is the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. We all have heard that PMUY has been extended and expanded by the Union Cabinet, and the next coming lines which are being mentioned as the statements in this particular question, they are on the same. So you have to first of all know that expand जो किया है उसके अंदर क्या करने वाले हैं. They will be additional 75 like LPG connections which will be given for a period of 3 years. And what is the tenure? Tenure is 2023-24 to 2025-26. So this is the tenure for this. Absolutely right. Second statement says about the nodal ministry for this, and this is the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Third statement says that the scheme was initially launched in the year 2018. So my dear friends, please identify that which statement is correct. See, statement 1 and 2 are absolutely correct, but what is the about the third statement? Is it correct or incorrect? So here I can see Dolly is saying that it was launched in 2016. Absolutely right. So that's it. Option third is statement is incorrect. So the right answer is option A, that is only 1 and 2 are correct. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं that it was launched in year 2016, और अब जब 75 लाख LPG connections को यहाँ पर ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर जो beneficiaries का नंबर है वो कितना होगा? The number of the beneficiaries will increase to 10.35 crore, and that is the right answer to this question. Let's move on to the next question. So what is the financial outlay allocated for the E-Code project? My dear friends, recently phase 3 of the E-Code project has been approved by the Union Cabinet, and आपके लिए question जो है that is about the financial outlay for this. तो financial outlay क्या होने वाला है for the E-Code project, कि क्या करना चाहता है, एक ऐसा एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है for the judiciary in India. ठीक है, तो आपके सामने question है about regarding this particular part. So my dear friends, the outlay for the E-Code project is 7210 crore. That is the right answer. अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट की, तो ये जो E-Code project है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे काम करता है, और यहाँ पर ये एक सीमलेस और पेपरलेस इंटरफेस, हम सभी बात करते हैं डिजिटाइजेशन की, तो यहाँ पर कोड्स के अंदर भी जो भी हमारा पेपर वर्क है उसको पेपरलेस इंटरफेस और एकदम सीमलेस बनाने की कोशिश की गई है. इसका टेन्योर रहेगा 4 इयर्स का. फाइनेंशियल आउटले को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. जब बात आती है इंप्लीमेंटेशन की, सो the implementation for this particular project will be done with the joint partnership of the Department of Justice, Ministry of Law and Justice, and the E-Committee of the Supreme Court of India. And that is right, absolutely right. So my dear friends, the right answer we have already discussed. We have already discussed the E-Code project in a detailed manner. Let's move on to the next question. So next question is on the screen, the Skill India Digital. तो Skill India Digital पे आपका अगला question है, and please tell me what is the right answer. The question is basically on the primary aim of the Skill India Digital. The first statement says that it provides free internet access to every Indian citizen. Second statement says promotes traditional education methods to ensure every Indian has access to the quality skill development, relevant opportunities and entrepreneurial support, to facilitate online shopping and e-commerce activities, to improve the agriculture sector in India. So which statement is correct? Question number 25, absolutely right. Option C is the right answer, in which this SID basically क्या है में इसका, it wants every Indian has access to the quality skill development, relevant opportunities and entrepreneurial support, and that is absolutely the right answer. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं SID की, it is a digital public infrastructure which will be providing all these facilities that we have covered in this particular part. My dear friends, I hope this is clear to all of you. So Samuel, do not worry, as you have just started the preparation. Do not worry, when you will be attending these particular sessions and you will be revising them, then you can definitely see that you will be able to answer the questions correctly in the upcoming sessions. Okay,
So for that, I just want to tell you that please see the fast track session that we come up on at 7 a.m. in the morning, and then on the next Saturday when we will be having the same session, then you can see and realize that yes, you will be also answering the questions correctly in that particular session. So my dear friends, let's move on to the next question. Next question is on the Global Symposium on the Farmer Right, and this is the very first such kind of initiative which has been taken, which has been held. So यहाँ पर आपके सामने 3 statements हैं on the Global Symposium on Farmers Rights, and you have to identify the correct statement regarding this particular part. So यहाँ पर जो पहली statement है, it is regarding the place where it was being held. So it was held in New Delhi. Second statement says that the primary aim is to facilitate the implementation of farmer rights. यहाँ पर जो farmers के rights हैं उनकी implementation को facilitate करना है इसका काम. Third statement says that it aims to promote the recognition of farmers as the conservers of the agro biodiversity, की जो यहाँ पर farmers हैं they are acting as the conserver जो agro biodiversity को यहाँ पर सेव करते हैं. And I can see here that all the people have given me the right answer. That is option D. That is all of the statements are absolutely correct to this particular question. Let's move on to the next question guys. अगला question है on the business responsibility and sustainability reporting. तो यहाँ पर आपको बताना है वो दो कौन सी entities हैं जिन्होंने organize की थी workshop इसके ऊपर, and this workshop aim to provide a comprehensive understanding. See my dear friends, business responsibility and sustainability reporting, तो जब भी ऐसी कोई चीज लॉन्च की जाती है तो उसके बारे में अवेयरनेस और उसकी अंडरस्टैंडिंग को पता लगाना काफी जरूरी है. फॉर एग्जांपल जब जीएसटी को हमने लॉन्च किया था तो जीएसटी को समझ पाना काफी मुश्किल था, तो उसके लिए काफी ज्यादा वर्कशॉप्स को लॉन्च किया गया था सो दैट कि उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों तक और अच्छी हो सके. और अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, यू हैव टू आइडेंटिफाई the organizations which were involved in this particular part. So what is the name of that organization? It is Indian Institute of Corporate Affairs and the United Nations International Children's Emergency Fund, which have come together in order to organize a workshop on business responsibility and sustainability reporting. Absolutely right. जब हम बात करते हैं BRSR की, ये एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर मैकेनिज्म है, और ये जो मैकेनिज्म है किसके लिए है? ये उन टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए है. एंड व्हाट दे विल बी डूइंग अंडर दिस? दे विल बी रिपोर्टिंग देयर परफॉर्मेंस ऑन द ESG एस्पेक्ट. ESG की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस. तो ESG के जो एस्पेक्ट्स है उनके ऊपर परफॉर्मेंस जो होगी इन टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज की, उनके लिए एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क है जो कि यहां पर लॉन्च किया गया है इन द फॉर्म ऑफ BRSR, एंड इट स्टैंड्स फॉर बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द इंपॉर्टेंट डेज, एंड इंपॉर्टेंट डेज से आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू कवर द 2 डायमेंशंस, दैट इज द डेट एज वेल एज द थीम. तो अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डुशेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी डे, एंड द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट what is the date on which we celebrate this, and what is the theme of the day for year 2023? So please tell me my dear friends in the chat box what is the right answer, what is the date on which we celebrate it. So basically it is being celebrated on 7th of September, and the theme for this year was Duchenne breaking barriers. Absolutely right. Option E is the right answer. I can see. So Manpal, Sridevi, Anuja, Vishnu, Riya, Shalini, Preeti, everybody has given me the right answer. That is option E. Let's move on to the next question guys. Next question is from the appointments. You have to identify the name of the person who has been recently appointed by RBI as the MD and CEO of ICICI Bank. So this is a very old news article because it was really in the news for a very long time, and finally the particular person has been reappointed as MD and CEO for a period of 2023 to 2026. And what is the name of that person? That is Sandeep Bakshi. Option C is the right answer. Next question guys. So next question is on the first ever FIBA Basketball World Cup title. So you have to tell me the name of the country जिसने defeat किया है सर्बिया को, and it became the first team to achieve this feat in their final debut since Spain in 2006. So my dear friends, what is the name of that country which has won it? Let me see who will tell me the right answer. So सर्बिया को डिफीट करने वाली उस कंट्री का नाम क्या है? इट इज बेसिकली जर्मनी. एब्सोल्युटली राइट. जर्मनी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सो यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द कंट्री व्हिच हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नेम्ड हीरो किम कुन ओके. सो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सबमरीन का नाम दिया गया है, और ये पहली ऑपरेशनल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है उस कंट्री की, एंड दैट इज व्हाई द नेम ऑफ दैट कंट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंट्री? The name of that country is North Korea. Absolutely right. Option D, North Korea is the right answer.
So let me tell you, my dear friends, the people who have given the another option, do not worry about it. As you are basically attending this particular session, after the session, please make sure that you are revising it. Do not get disheartened on giving the wrong answers, because the most important thing is your courage and your bravery in attempting these answers without even knowing. Because the number of mistakes that you will be doing in these kind of sessions, when you will be attempting and sitting in the exam, at that point of time you will not be having a single mistake to commit, because all of you must have committed all those particular mistakes in these sessions only, and at that point of time you will be only submitting the right answer in the exam. So my dear friends, let's move on to the next question. अगला question है, you have to identify the name of the person जिसने recently अपना 4th US Open title जीता है, and that particular person has defeated Daniel Medvedev and won his 24th Grand Slam singles championship. What is the name of that person? That person is really a person who is having a streak of winnings in the past year, and the name of that person is Novak Djokovic. Okay, so Novak Djokovic is the right answer to this question. So Preeti, do not worry, decision making के ऊपर भी हम sessions लेकर आएंगे आने वाले time में. Do not worry about it. So let's move on to the next question, guys. तो recently Indian Navy ने collaboration किया था एक organization के साथ, under which जो naval personnel हैं, उनकी families हैं, उनका जो personal travel और commute है, उसकी जिम्मेदारी उस company को दी गई है. You have to tell me that what exactly is the name of that particular company. So my dear friends, we always see that there are two organizations which comes to our mind whenever we just talk about booking the cabs, and the name of those organizations are Ola and Uber. Let me tell you that Ola is the organization which has recently announced that it will be setting up the largest EV hub in Tamil Nadu. Okay, when I talk about the Uber is the one which has collaborated with the government, in which they will be providing the commute services to the गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम ऊबर ही है, बिकॉज ऊबर हैज आल्सो साइंड एन MOU with the Navy, in which it will be taking care of all the personal travel and commute of the naval personnel and their families across the country. Let's move on to the next question. Next question is on Bharat, the mother of democracy, which was basically a kind of exhibition which was taken place during the G20 summit. You have to tell me the name of the ministry which has basically come up with this kind of initiative, जिसने कि इसको लॉन्च किया है. The name of that ministry is Ministry of Culture. Option C is the right answer. Let's move on to the next question, guys. So यहां पर आपको बताना है उस कंट्री का नाम जिसके साथ इंडिया ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, जिसके साथ वो क्या करेंगे. वी ऑल नो वी आर फोकसिंग ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू एनहांस आवर एनर्जी एफिशिएंसी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर country with which India has signed this particular MOU? So the right answer to this question is option C, that is Saudi Arabia. Now my dear friends, there is a googly question for all of you. You have to tell me the year by which India is targeting to become net zero carbon emission country. Can you tell me what is a year by which we are basically coming up with this kind of initiative by which we are targeting to achieve that particular target? So Vishnu, Shalini, Sridevi, Arbindro, all the people are saying that it is 2070, and absolutely right, my dear friends, 2070 is the right answer. Now my dear friends, the people who are saying that it is 2030, let me tell you that sustainable development goals, we are having total 17 sustainable development goals, and these goals are basically we are targeting to achieve them by year 2030. The whole world is targeting to achieve them by year 2030. So I hope that this is clear to all of you. We have already covered another additional information here. Absolutely right. So my dear friends, let's move on to the next question. So next question is on the Global Biofuel Alliance. So my dear friends, we all know about the International Solar Alliance, which is basically headquartered in Gurugram, Haryana. Similarly, on the lines of the ISA, Government of India has come up with the Global Biofuel Alliance. Okay, so Global Biofuel Alliance के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं. You have to identify the correct statement with regards to the Global Biofuel Alliance. पहली स्टेटमेंट कहती है कि इसको अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग द G20 समिट. अगर हम बात करते हैं इसके एम की, इट एम्स टू फैसिलिटेट द अडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स बाय फॉर्मिंग एन अलायंस ऑफ द गवर्नमेंट. तो यहाँ पर गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज का एक कोलैबोरेशन बनाया जा रहा है टू फॉर्म अ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट इट प्राइमरली फोकसेस ऑन डेवलपिंग न्यूक्लियर एनर्जी
solutions. So my dear friends, it is very easy to answer this question. You can very easily eliminate the statement number 3. Why so? The reason behind that is it states that it focuses on developing nuclear energy, but we are targeting about biofuel. We are talking about biofuel. The initiative name is on the biofuel, so why it will be just focusing on the nuclear energy? So that's why option 3 is absolutely incorrect. The right answer here is option C, that is both statement 1 and 2 are correct. Absolutely right. So जब हम बात करते हैं कि कितनी कंट्रीज ने बेसिकली इसको अग्री किया है, till now there are 19 countries and 12 international organizations which have agreed to join the alliance. I hope this is clear to all of you, my dear friends. We have already covered all the other important details of this particular part. Let's move on to the next question. So next question is on another MOU. This MOU has been signed by the organization to explore opportunities in the green hydrogen. तो as we told you, green hydrogen और green energy space के ऊपर काफी ज्यादा चर्चाएं हैं, काफी ज्यादा MOU साइन किए जा रहे हैं. अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है. आपके सामने क्वेश्चन ये है कि बेसिकली ये जो MOU है इसके लिए किसने साइन किया है, जिसके अंदर जो नयारा एनर्जी है, तो नयारा एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को यहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा एंड उसके जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया जाएगा. आपके सामने क्वेश्चन है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर नयारा एनर्जी के लिए काम किया जा रहा है, तो नयारा एनर्जी को भी अपने लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज द नेम ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज द एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड व्हिच हैज कम अप विद दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है 8th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023. लेट मी टेल यू, 2015 के अंदर, in 2015, President Vladimir Putin basically come up with this kind of initiative, that is Eastern Economic Forum. और जब हम बात करते हैं इस साल की, तो ये इस साल जो है ये पर्टिकुलर चीज कहां पर होने वाली है, ये इकोनॉमिक फोरम कहां पर होने वाला है. See, as I told you that it was basically put forward by the Vladimir Putin, the Russian person, the president of Russia. And my dear friends, the right answer here is once again Russia only. Absolutely right. So president of the Russian Federation, Vladimir Putin, has established this in year 2015. That is absolutely the right answer. Let's move on to the next question. So अगला क्वेश्चन है G20 लीडर्स समिट के ऊपर. G20 लीडर्स समिट, we all know it was held in the Delhi. तो यहां पर इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर इसको यहां पर किया गया है कंडक्ट. तो G20 लीडर डिक्लेरेशन ने अडॉप्ट किया है समिट के दौरान a roadmap for the tourism, and you have to tell me that which one of the following values will correctly fill this particular blank. So here, my dear friends, what is the right answer? It is the Goa roadmap for tourism. That is absolutely the right answer. See, my dear friends, tourism के लिए सबसे ज्यादा फेमस जगह क्या है? जब फ्रेंड्स वगैरह जो भी प्लान बनाते हैं घूमने का, सबसे पहला जो दिमाग में हमारे एक प्लेस आती है, दैट इज द गोवा, एंड गोवा इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. द होल वर्ल्ड हैज आल्सो डिक्लेयर्ड, हैज साइंड अप दिस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन ऑफ द गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई कैन सी हियर दैट विष्णु, श्रद्धा, निरंजन, आहूजा, जानवी, रिया, शालिनी, श्रीदेवी, शालिनी, everybody is giving me the right answer to this question. That is option E, that is Goa. Absolutely right, my dear friends. Let's move on to the next question. Next question is on the exercise which is being conducted between India and French Navy in the Arabian Sea. तो यहाँ पर आपको बताना है उस एक्सरसाइज का नाम जिसको रिसेंटली कंडक्ट किया गया है. What is the name of that particular exercise? The exercise name is exercise Varun. So my dear friends, another question for all of you. Please tell me, exercise Dharma Guardian is being conducted between India and which country? कौन सी कंट्री के साथ इंडिया धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस व्हाट इज द राइट आंसर. सो आई कैन सी श्रद्धा, दीक्षा, शालिनी, मनपाल, जागृति, everybody saying Japan, and absolutely right. Japan is the right answer to this particular question. Let's move on to the next question, guys. अगला question है regarding a scheme that is मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना. तो मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत उन्होंने क्या किया है, उस स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर पीपल को यहां पर फाइनेंशियल एड देने की बात की गई है, फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई है, टू प्रोवाइड देम द सोशल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एड टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द स्टेट व्हिच हैज कम अप विद दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव, एंड इट इज झारखंड. ऑप्शन बी, झारखंड इज द राइट आंसर. जब हम बात करते हैं एलिजिबल बेनिफिशियरीज की, दे विल बी गिवन ₹1000 per month as a financial aid, and apart from that, let me tell you, my dear friends, that these transgenders have been included under the backward class category and they will be provided with the benefits. And absolutely right, option B, Jharkhand is the right answer. Absolutely right, my dear friends. Let's move on to the next question. Agla question is once again from the important days, and the question is on International Day of Clean Air for the Blue Skies. आपके सामने question है, what was the theme of this particular day which is being celebrated every year on 7 September? तो clean air की बात की जा रही है. 7 September 2023 को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है. आपके सामने क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे.
डे एंड द थीम इज टुगेदर फॉर द क्लीन एयर। हमें क्या करना होगा, हमें क्लीन एयर के लिए हम सभी को इकट्ठे काम करना होगा। वी हैव टू यूनाइट एंड माय डियर फ्रेंड्स दैट इज व्हाई द थीम फॉर दिस पर्टिकुलर डे इज टुगेदर फॉर क्लीन एयर। आई बिलीव दैट यू मस्ट बी एबल टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। जब हम बात करते हैं क्लीन एयर की, सो ऑल of us have to basically come together for the clean air to make our air clean. Now let's move on to the next question. The next question is on the 2023 trade finance gap. Okay, so trade finance gap growth and job survey was being launched by the Asian Development Bank, and this question is on the key finding, on the major finding of this particular report. And the question is that what was the global trade finance gap in 2022? So what was that particular gap in 2022? That particular gap was basically, earlier it was 1.7 trillion and now it has increased to 2.5 trillion dollars, and that is absolutely the right answer. You can see here my dear friends, 2 साल पहले ये वैल्यू 1.7 ट्रिलियन डॉलर थी और इस साल जो वैल्यू है इट वाज 2.5 ट्रिलियन डॉलर, एंड एब्सोल्युटली राइट, दैट वाज द राइट आंसर। जब हम बात करते हैं ट्रेड फाइनेंस गैप की, ट्रेड फाइनेंस गैप आखिर क्या चीज है, क्या है ये बेसिकली डिफरेंस है जो भी रिक्वेस्ट और प्रपोजल्स दिए जाते हैं जिसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है, उनकी रिक्वेस्ट और अप्रूवल्स के बीच में जो डिफरेंस रहता है दैट इज कॉल्ड द ट्रेड फाइनेंस गैप। आई होप माय डियर फ्रेंड दैट दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगले क्वेश्चन आप सभी के सामने है। वी ऑल नो दैट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ड्यूरिंग द G20 समिट एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था जिसके अंदर उन्होंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द G20 समिट प्रोवाइड की है उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर, सो दैट द पर्सन हु इज अटेंडिंग दैट इवेंट दे हैव बेसिकली द नोट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर बीइंग टेकिंग प्लेस एंड किस टाइम पर क्या चीज है। जब भी हमारे पास एक अच्छा शेड्यूल होता है हम उन सभी इवेंट्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, अटेंड कर पाते हैं। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, दिस ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द नेम ऑफ दैट ऐप इज G20 इंडिया। तो G20 इंडिया उस ऐप का नाम है जिसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। सो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। आपके सामने क्वेश्चन है कि किस डेट को इससे सेलिब्रेट किया जाता है। द डेट ऑन विच वी सेलिब्रेट दिस इज 8th of September। एब्सोल्युटली राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, इट इज ऑन द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 एंड यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द कंट्री जिसने होस्ट किया है ब्राइट स्टार एक्सरसाइज को। सो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज 2023 को होस्ट करने वाली वो कौन सी कंट्री है? इज इट सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, इजिप्ट एंड जॉर्डन? लेट मी टेल यू दैट इंडिया हैज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज एंड द नेम ऑफ दैट country which is hosting the exercise is Egypt. That is option D. Absolutely right. I can see Meditation, Shraddha, Kumari Diksha, Riya, Niranjan, all the people have given me the right answer. That is option D, Egypt. Let's move on to the next question guys. तो जैसा कि अब हमने बात की थी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार की, I also told you कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, समिट होती है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल G20 समिट हुई दिल्ली के अंदर। सिमिलरली 20th Asian India Summit was also been held. You have to tell me that what exactly is the name of the place where it is being taking place. तो 20th Asian India Summit जिसके अंदर एशिया नेशंस और इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, and the name of that particular country and the place is Jakarta in Indonesia which has hosted this particular summit. Let's move on to the next question guys. So next question is on the गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि एक इंडियन रेलवेज की इनिशिएटिव है, उन्होंने MOU साइन किया है। You have to identify the name of that aerospace company जिसके साथ ये MOU साइन हुआ है, and this MOU has been signed for aerospace teaching and the research and it aims to strengthen the Indian aviation sector. So my dear friends, please tell me what is the right answer to this question. The right answer, the name of that organization is Airbus, with which Gati Shakti Vishwavidyalaya has signed an MOU. Let's move on to the next question. Next question is a very very important question. I am marking the star here because it is very very important question on the Malviya mission. The Malviya mission, a teachers training program, has been launched recently and you have to go through the statement and identify the correct part. So my dear friends, here the very first statement is that it has been launched by the University Grant Commission. The aim of this mission has been mentioned in the second statement, and it will work for the capacity building of faculty members in the higher educational institutions, and that is the third statement for this particular part. So what is the name, what is the right answer, which statement is correct? So here all the statements which are mentioned here are absolutely correct. Absolutely right, Shraddha, Preeti, Anuja, Shalini, Riya, Manpal, all the people have given me the right answer. So जब हम बात करते हैं कि ये UGC का जो मालवीय मिशन है which is a teachers training program, तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किसने किया था? It was organized by UGC along with the Ministry of Education, Malviya Mission Teacher Training Program. So I hope that this is clear to all of you. And now my dear friends, we are moving towards the last question of our today's session, and the last question is here on the screen. As we just covered the UNESCO heritage list,
में इंडिया की एक पर्टिकुलर लोकेशन है जिसको ऐड किया गया है. सिमिलरली इंडिया का एक पहला सोलर सिटी बना है विच इज फीचरिंग अ सोलर प्रोजेक्ट विच एम्स टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कार्बन एमिशंस. तो यहाँ पर उस कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की बात की जा रही है. यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिटी. लेट मी गिव यू अ हिंट दैट सिटी इज लोकेटेड इन रेसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ Madhya Pradesh. So what is the right answer? I want all of you to tell me the right answer. So option C, Sanchi is the right answer. So option C, Sanchi is the right answer, my dear friends. So that was all from the today's session, and we have covered the 50 MCQs from the month of September. And now, my dear friends, it is your time to tell me your scores in the chat box, at what exactly your score is, because analyzing your score is very important. With the score you have to see that what kind of the questions that you have attempted correct, what are the questions that you have attempted incorrectly, and the question that you have attempted incorrectly, these kind of questions are required to revisit, to be revised. And you have also to see that analyze that yes, these are the kinds of data that I basically miss while my preparation, okay, that I tend to forget while my preparation. So my dear friends, so that is why it is really very important for all of you to basically analyze this particular score. And if you are still new to our YouTube channel, you can subscribe to our YouTube channel, and you can also press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And you can also join our Telegram channel. Let me tell you that the PDF of this session will be provided to you in the Telegram channel only. I hope this is clear to all of you, my dear friends. And I can see here the scores of the people. So Shalini has scored 47, Anuja 40, and Riya 43, Preeti 22. So my dear friends, the people who have scored higher, let me tell you that it is really a very important achievement for all of you. Do celebrate it. But let me tell you that you have to keep up the momentum. ठीक है, इसी तरीके से प्रिपरेशन को करते रहिए, इसी तरीके से चीजों को करते रहिए, and you will definitely clear the exam. And those people who have scored less marks, do not worry, my dear friends. You do not have to get disheartened. Just make sure that in the next session, when I will be taking this next session, then at that point of time you must come prepared. See the fast track sessions that we basically upload on our YouTube channel, and we will be revising those fast track sessions through these top 50 MCQ session. Now my dear friends, if you are having any kind of queries, you can just mention your queries in the comment section. Apart from that, if you are having any feedback regarding this session, you can also mention that feedback in the comment section as well. Like if you want to take these sessions in a different manner, or anything specific that you want, you can always mention that in the comment section, and I will try my best to come up to make those changes in our sessions as well. And if you like the session, you can also mention about the same in the comment section. So as I can see here that there are no more queries in the people's mind. So my dear friends, if still you are seeing the recorded version of this session, then what you can do, if you are having any kind of query, you can just drop us a mail at hello@edutap.co.in, and you can also call us at 814-620-7241. So my dear friends, I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.